हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से कुछ क्वेश्चंस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नर्सिंग के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स में मिलेगा और आज का जो फोकस है वो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स पे। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स पे ऐसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल सकते हैं। दो हम बस 5 से 6 क्वेश्चंस ही आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इसी तरह से मेरे साथ इंटरैक्टिव क्लासेस चाहिए या फिर अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए अब आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन जस्ट गो ओवर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन डिस्कशन, आते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। At a follow-up visit for an 8-year-old who is being evaluated for short stature, the nurse measures and plots the child's height on the growth chart. Which explanation should the nurse give the child and the family? First one, we want to make sure you were measured accurately the last 2 visits. Now, height velocity जो है ना, it is important to determine not whether the measurement was incorrect at a previous visit. तो ये तो उतना अच्छा नहीं जा रहा है एक्सप्लेनेशन की हिसाब से। नेक्स्ट है, we need to calculate how tall you will be when you grow to adult height. Now, expected adult height can be determined using a formula that takes into account the parent's height and can be calculated at any visit. तो ये भी उतना अच्छा explanation नहीं हो रहा है. Next, we need to see how much you have grown since your last visit. Now, height velocity is the most important aspect of a growth evaluation and can demonstrate deceleration in growth if it is present. So, yes, हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा explanation है that the nurse should give the child and the family. Last one, we need to know your height so that a dosage of medication can be calculated for you. Now the dose of the growth hormone replacement medication is obviously based on weight. तो ये उतना अच्छा explanation नहीं हो रहा है. Next question पे आते हैं. Question number 2. What key information should be explained to the family of a 3-year-old who has short stature and abnormal laboratory test results? Let's see what options are given. कौन सी की इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन किया जा सकता है एक फैमिली को जिनका 3 साल का एक बच्चा है जिनको शॉर्ट स्टेचर है एंड एबनॉर्मल लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स हैं. Because of the diurnal rhythm of the body, growth hormone levels are elevated following the onset of sleep. Now, growth hormone levels elevate during sleep but cannot be used to determine a definitive diagnosis. तो इसीलिए इसको हम उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं. एक्सरसाइज कैन स्टिम्युलेट द ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएशन. नो, एक्सरसाइज इंक्रीजेस द ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएशन बट कैनॉट बी यूज्ड फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस. तो इसीलिए ये भी उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है. नेक्स्ट, द इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट्स नीड टू बी रिपीटेड फॉर एक्यूरेसी. नहीं, ये भी उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज स्क्रीनिंग टेस्ट्स असिस्ट इन डिटरमाइनिंग इन विच डायरेक्शन फर्दर स्टडीज शुड बी डन. तो इसलिए ये थर्ड वन भी उतना अच्छा की इन्फॉर्मेशन नहीं है. Growth hormone levels in children are so low that stimulation testing must be done. Now, the need for additional testing requires explanation. The abnormal IGF-1 and insulin like growth factor binding protein require a definitive diagnosis when the levels are either abnormally high or low. So, very young children do not secrete adequate levels of growth hormone to measure like accurately and thus require challenge or stimulation testing. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 नंबर जो है वो एक की इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी एक्सप्लेन्ड टू द फैमिली ऑफ अ 3-year-old जो ऐसे ऐसे चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं. Next question. A 6-year-old white girl comes with her mother for evaluation of her acne, breast buds, auxiliary hair, and body odor. What information should the nurse explain to them? This is a typical age for girls to go into puberty. Now, although girls in the United States they mature earlier than in previous decades, but the lowest rate
The lowest age at which like puberty is considered normal is 7 years for white girls and 6 years for African American girls. So ये तो उतना अच्छा explanation नहीं होगा nurse की तरफ से. Encourage the girl to dress and act appropriately for her chronological age. Now, dressing and acting appropriately for her chronological age should be encouraged for the well-being of the child. तो ये एक अच्छा like explanation हो सकता है nurse की तरफ से. Next, she should be on birth control because she is fertile. Oh my god, this is totally irrelevant. Now, although she is fertile if she is pubescent, but it is not developmentally necessary to consider the use of birth control at this time. She is too young for that. Okay, so ये तो गलत हो गया. Next, she may be short, but if she may be short if her epiphysis close early. Now, the estrogen that is produced during puberty does assist in the closure of the epiphyseal plates. So, with proper like medication management, however, this estrogen will be suppressed and she will like continue to grow. So, ये भी उतना अच्छा explanation तो नहीं है. Next question. A nurse is caring for an infant who is very fussy and has a diagnosis of diabetes insipidus, that is DI. Which parameters should the nurse monitor while the infant is on fluid restrictions? Select all that may apply. Oral intake. Now, although monitoring the fluid intake is necessary, but the child is on fluid like restriction and the amount of intake will be prescribed. तो ये तो नहीं जाएगा. Second, urine output. Now, it is crucial to monitor and record the urine output. The infant with DI, that is diabetes insipidus, um, has hyposecretion of ADH and fluid restriction has little effect on the urine formation. So this infant is at risk for dehydration and for fluid and electrolyte imbalances. तो ये हम select कर सकते हैं. Next, appearance of the mucous membranes. Now, it is a basic part of assessing the infant with fluid restriction to monitor the skin turgor and the appearance of the mucous membranes, but they are not an absolute determination of overall well-being. ठीक है, तो ये हम consider नहीं कर सकते. Next है change in the pulse and temperature. Now it is a basic part of assessing the infant to check the pulse and temperature. The infant can become very hyperthermic, but neither would be an absolute indicator of well-being. तो इसीलिए ये भी उतना अच्छा नहीं जाएगा. Next, lethargy and pain. Lethargy means no energy and all, and pain. So, as a result of diabetes insipidus, the infant may have behavioral changes such as lethargy and pain. तो इसको हम consider कर सकते हैं. Next question. A 12-year-old comes to the clinic with the diagnosis of Graves' disease. What information should the nurse discuss with the child? Now, let's see कौन से information nurse provide करते हैं child को और क्या discussion चलता है. Suggest weight loss. Now, children with Graves' disease have voracious appetites and lose weight. तो ये तो नहीं होगा. Second, encourage attending school. Now, encouraging school and continuation of typical activities is better in terms of long-term management. Gym class and after-school sports should be restricted basically until the child is euthyroid. Okay, तो ये भी उतना अच्छा नहीं जा रहा है. Next, emphasize that the disease will go into remission. Now, Graves' disease may go into remission after 2 or 3 years. So there are some children, however, for whom it does not. So ये भी नहीं अच्छा information है. Encourage the child to take responsibility for daily medications. Now, because the child is 12 years old, जैसे कि यहाँ पे mention किया गया है 12-year-old, so encouraging responsibility for health care is important. Now, the child still needs family involvement and ongoing supervision, but should not be completely dependent on family for care. ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं, ये नर्स कह सकते हैं. ठीक है.
ओके, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे डिस्कशंस करने हैं, स्टडी मटेरियल्स चाहिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की एंट्रेंस एग्जाम हो, प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस से हेल्प ले सकते हैं। गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे हम। स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस। एंड अगर आप अलग से खरीदना चाहते हैं स्टडी मटेरियल्स, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा था। तो बाकी से सभी डिटेल्स देखने के लिए आपको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट लिंक। एंड इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।